So here in this video, we are going to see the types of motion. Motion is basically divided into three types. We classify it as uniform motion and non-uniform motion. यहाँ पे example assume करो यहाँ पे एक vehicle है which is covering 2 meters in 1 second. It is again covering next 2 meters in 1 second and so on. Which means you can see that every time, every 1 second, it is covering 2 meters. So in short, I can say that it is covering equal distance in equal interval of time. So any object or any body that is covering equal distance in equal time interval, then that object is said to be having uniform motion. इसका definition यहाँ पे दिया हुआ है. इसका उल्टा, where you are covering unequal distances in equal or say unequal time. सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करो या अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करो. ये पहले आप 1 मीटर कवर कर रहे हो, फिर 2 meters and then 5 meters and again 2 meters. So in that case, the body is said to be in non-uniform motion because the distance covered is unequal and the time is also unequal. ये रहा non-uniform का definition. So यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म मोशन में हम डिस्टेंसेस इक्वल कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल और अनइक्वल टाइम. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी सी इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम वेलोसिटी का चेंज होते रहना. Example, पहले let's say the car is at rest, so it is having 0 meters per second. Next, the velocity is 2 meters per second. Next, it is 4, 6, 8, and so on. Which means you see that after every 1 second, the velocity is changing. It is increasing. So this change in velocity with respect to given time is nothing but called as acceleration. तो उसका अब हम छोटा derivation देखेंगे. Derivation will start from the definition itself. It says rate of change of velocity, but rate of change of velocity का मतलब होता है कि time रहते velocity का again and again change होना. So we write it as change in velocity upon time. Now how do we determine the change in velocity? जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि rest पे है, so it is 0 meters per second. Then it started with 2 meters per second. The velocity change हुआ. कितने से change हुआ? 2 meters per second. How did we find? 2 minus 0 करके. So if I'm considering this part, I can say that this is my initial point and this is my final point. The initial point पे initial velocity होगा, final point पे final velocity होगा. तो जब मैं 2 minus 0 करती हूँ, which means final velocity minus initial velocity perform होगा. So that is what I have written over here in the derivation. Change in velocity is nothing but final velocity minus initial velocity upon time. Final velocity is determined or given by v. Initial velocity is given by u and time is given by t. Hence we have the acceleration formula as a is equals to v minus u upon t. The unit of acceleration is meter per second square. ये आया है इसी फॉर्मूला से कि फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करोगे तो आंसर यहाँ पे वेलोसिटी ही आएगा. वेलोसिटी का यूनिट हमने लास्ट वीडियो में देखा, इट इज मीटर पर सेकंड. सो मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का सेकंड. सो सेकंड इंटू सेकंड इज सेकंड स्क्वायर. ये कैंसिल नहीं होता. व्हेन यू राइट इट नॉर्मली इट इज मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड. हेंस वी गेट इट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ जैसे मोशन का दो टाइप्स था, सिमिलरली एक्सीलरेशन का दो टाइप्स है, दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन. पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज when the acceleration is in increasing order. यानी जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड सो ऑन. सो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेलोसिटी चेंज होता है तो इसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं. और अगर ये उल्टा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जैसे 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 एंड सो ऑन. अगर ये ऐसे उल्टा आ रहा है तो उसे हम नेगेटिव एक्सीलरेशन या उसे रिटार्डेशन कहते हैं. इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है that when you start a car it is at rest, so 0 से 2, 2 से 4 and then you accelerate, उसका स्पीड बढ़ते रहता है. So in that case it is a positive acceleration. Similarly traffic signals पे जब भी अचानक जब हम ब्रेक मारते हैं
उसमें क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी से मिनिमम पे आते हैं, यानी 10, 8 से लेकर सीधा 0 पे आता है. So in that case, again the velocity is changing, but it is in decreasing order, उल्टा होता है. So that example is for negative acceleration, or it is termed as commonly retardation. I hope you are clear with the topics. First lecture has I have taken only the basics, but these are also very important from exam point of view for definitions and derivation as well. If any doubts, let me know. Please go and learn the definitions and derivations thoroughly. Thank you.